फ्रेंड्स, इन इसके पहले के एपिसोड्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर चुका हूँ कि ग्रेजुएशन करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी राह बहुत ही आसान हो। और इस पे मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ कि ग्रेजुएशन का जो मिड फेज़ 2 to 3 इयर्स का फेज़ होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें वो सारी चीज़ों की आप प्रिपरेशन करते हैं जिनकी ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लाइफ में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और ग्रेजुएशन करने के बाद जिस लाइफ में आप आते हैं उसमें आपका स्ट्रगल बहुत कम हो जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे बात की थी कि जब आप ग्रेजुएशन के मिड फेज़ ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स के हों 2 to 3 इयर्स में, तो अपना आप CGPA हायर साइड में रखने की कोशिश करें, क्रेडिट स्कोर हायर साइड में रखने की कोशिश करें। जो ऑनलाइन इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स होती हैं 4 वीक्स की, 6 वीक्स की, 1 मंथ की, ऐसे सारे बहुत सारे ऑनलाइन इंटर्नशिप्स होती हैं जिनको ज्वाइन करें। मल्टीपल स्किल्स अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करें। और इसके साथ ही मैंने बात की थी कि बहुत सारे ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, रिपीटेड प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन बहुत रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन से होता है। उन ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज्वाइन करें और ये सब करके अपने फ्यूचर की तैयारी को अच्छे से करें। फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अपना प्लेसमेंट भी अच्छी चॉइस की कंपनी में अपना क्रैक कर पाते हैं। पर मैं जैसा कि अपने पहले एपिसोड में भी बात कर चुका हूँ कि जॉब तक आना और जॉब लेने के बाद, जॉब के बाद की लाइफ को सक्सेसफुल रखना, इन दोनों में फ्रेंड्स बहुत ही डिफरेंस है। और जॉब में आ जाने के बाद आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस होंगे, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, वो क्या हैं और उसको नर्चर आपने ग्रेजुएशन करते हुए आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो जॉब में आने के बाद आपको एक टफ टाइम या स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि अब वो क्या स्किल्स हैं जो आप ग्रेजुएशन के मिड फेज़ में उसको डेवलप कर लें ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद, जॉब में आने के बाद आपकी सक्सेस राह बहुत ही आसान हो जाए। जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट था जिस पर मैंने बात की थी, कम्युनिकेशन स्किल। फ्रेंड्स, इसके ठीक पहले एपिसोड में मैंने बात की थी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो 2 टाइप की होती है, ओरल एंड रिटन। एंड ओरल कम्युनिकेशन में मैंने डिटेल में बात की थी कि ये क्या होती है और ओरल स्किल को आप डेवलप करने के लिए अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में क्या क्या एलिमेंट्स का ध्यान रखें और कैसे उसको नर्चर करें ताकि आप ग्रेजुएशन करते हुए अपनी ओरल स्किल को बिल्कुल एक्सेलेंट, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लें ताकि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, जॉब में आने के बाद इसको लेके स्ट्रगल ना करना पड़े। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि जितना इम्पोर्टेंस ओरल स्किल का है उतना इक्वली इम्पोर्टेंस है रिटन कम्युनिकेशन स्किल का। और रिटन कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ही ऑब्जेक्टिव, सॉलिड और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और उसको कैसे करें इसको मैं आज अपने इस एपिसोड में अनलॉक करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए आर के टॉक्स में और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे शार्पन करें, कैसे अच्छा करें ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद की जो आपकी लाइफ है वो स्ट्रगल फ्री हो जाए और आप सफलता के नए आयाम ईयर बाय ईयर अचीव करते चले जाएं। रिटन कम्युनिकेशन आपको करना पड़ता है लेटर के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू, नोटिसेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, बुक राइटिंग, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा के थ्रू आपको रिटन कम्युनिकेशन करना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और इसके पहले जहाँ तक मैंने आपसे बात की थी कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, वो प्रेजेंट होता है, पर उसके साथ आप खुद अवेलेबल होते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वॉइस ऑफ टोन है वो उसके साथ क्लब हो जाती है और सारा कुछ आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। बट रिटन कम्युनिकेशन में चूंकि आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं और केवल टेक्स्ट मैटर ही जाता है रिसीवर के पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका रिटन कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल हो। और रिटन कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है ग्रामर, पंक्चुएशन एंड वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन के ये 4 C's क्या होते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं फ्रेंड्स, ये 4 C's को अगर आप ध्यान में रखें तो आपका रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव, क्लियर और स्ट्रांग हो जाता है। और ये 4 C's हैं: क्लियर, कंसाइज, कर्टियस एंड कंप्लीट।
Your written communication should be very clear. It should be concise, crisp. It should be courteous. It is voice of your tone, and it should absolutely be complete. I'm going to discuss in detail as to how to make your written communication clear, as to how to make your written communication concise, courteous, and complete, step by step. So friends, the first step is clarity. The written communication should be full of clarity, because it will reduce misinformation, misconception, miscommunication, and mistakes. And how to do it so that the written message is very clear? There are three things that you should keep in your mind. The first element is the words that you are using while writing your text should be very simple. Please use simple words, simple language. When we talk of simple language, it means that you should use common words. I mean, the words which are used in common day-to-day life, those words frequently should be used, and your sentence structure should be short, so that the message that you wanted to convey is clear and easy to understand by the receiver. And the third very important element is simple sentence structure. You should try to avoid complex sentence structure, or the combination of sentence structure. So your sentence structure should be very simple. So friends, simple words, simple language, simple sentence structure, these three things if you try to incorporate in your writing skill, your writing communication, your written communication is going to be very clear, and there will be absolute clarity. Now the second important element is conciseness. Why it is important to make your written communication concise? Because to get to the point quickly, I mean, you should talk in the point wise, and you should include only relevant details. All irrelevant details you should try to avoid. And the third very important component to make it concise is all about staying on the topic. So these 3 points are very important to make your written communication concise. It should be to the point, it should be very relevant, and you should always talk about the topic where you are concerned about. Now next, third is tone or courtesy. The tone is the voice of your writing, because physically you are not present. You cannot convey your message through your body language or your voice. So the words that you are writing is going to convey your emotions. Basically the tone or courtesy is part of writing skill, where you are conveying your personal emotion to the reader by writing or using certain words. So you have to be very particular while writing that what type of emotion you wanted to convey. I mean, if it is very much strict, then the words should be chosen accordingly. If it is very friendly, it should be chosen accordingly. Or sometime if you want to become very diplomatic, that way also your written communication should be gauged accordingly. The degree of friendliness or formality, how formal you are in the written communication or how informal it should be, it depends on nature of written communication. So accordingly you should decide to what extent you can go friendliness, and to what extent you can make your written communication formal or informal. And the third very important component is in writing written communication is, if you are pointing out errors or inaccuracies or mistakes. So friends, try to be friendly but yet professional. I mean, you have to convey your message clear that yes, this is not done, or this is not good, or these are the errors, or these are the inaccuracies taken into consideration. But then your written communication should be so as that the receiver is not getting hurt, the mistakes are pointed out, but then yes, while writing you set the tone of writing so that message of mistake is also communicated, and in a very professional way, but then yes, it is friendly. So at times you have to be diplomatic, and you have to create a situation where it is critically balanced.
And the next element is completeness. As far as completeness is concerned, you cannot close your written communication all of a sudden. You make sure that your written communication is complete and closed. I mean, the closing note of the written communication should get connected with the subject matter from where you started, and it should be complete. Abruptly you cannot close your written communication, so it should go spontaneously, and that way you should try to make it, complete. And the closing end or the closing note should be written in a very professional way, so that it is moving spontaneously and closing in a proper way. So friends, as I have spoken about 4 C's, now having understood what all you should take into consideration, I'm going to talk to you how to improve upon your written communication. What are the skills or what are the components that you take it into consideration? So the very first component is use active voice, because moment you start using active voice, it flows better, it makes your writing more persuasive and spontaneous. So if you want your writing should be flawless and it flows continuously and it is spontaneous, then avoid passive voice and always try to use active voice. Active voice, it allows a reader to move through the writing quickly, and it becomes, the flow becomes very easy, and for that it is recommended that maximum you try to use active voice sentences, so that your written communication becomes very very effective. Now the next element is grammar and punctuation. This part is equally important, friends. While doing your written communication, your grammar should be very very particular. Your all punctuation and errors from the point of view of grammar should be taken into consideration, that it is absolutely free from all grammatical and punctuation mistakes. And for that it is recommended that please try to see these things not happening at all. I mean, you should try to check that the spelling is correct, preposition is correct, punctuation, verb, tense, article, conjunction and other basic grammar rules are absolutely correct in your written communication. Now the second element you should keep in mind, you should nurture to improve your written communication is proofread, edit and revise. So when we say that the written communication should be proofreaded, it would mean proofreading should be done 2 to 3 times to ensure that it flows well, the writing makes sense, it is error free and free from all unnecessary details. You are not writing any irrelevant matter in your written communication. And for that also, again, it is recommended that having done proofreading and editing and revision and corrections incorporated, leave your written communication for an hour or two or for a day or so, and revisit your written communication once again after giving a proper gap. And then after, once you revisit your written communication and see to it that there are still potential errors in the written communication and you wanted to remove it to them from there, so do it again. And once it is done, then you consider your written communication is final for sharing or for sending it to the receiver, and then you can go ahead for the documentation and all that. Friends, based on my personal experience, two of the very very important component I'm going to share as to how will you improve upon your written communication. The first thing I would recommend, I understand you may differ also, but as far as my personal experience is concerned, I would recommend, while doing your graduation course, please stop using any of the AI tools like ChatGPT, Gemini, or there are so many tools. That way you become dependent on AI tools, and your thinking style you don't nurture in a proper way. So avoid using AI tools during graduation program. And howsoever a small message or a small written communication is to be done, whether it is official or unofficial, try to develop and write by your own. That way you will nurture your cognition, your thinking style, and once your thinking style is tuned as per the demand, and thereafter you don't face any difficulty. And even if
you are not using AI tool, you can write better than any AI platform or chat GPT. So it is recommended that what you wanted to convey, you should think critically, process it in your mind, and pen down your thoughts on the paper and avoid using AI tools. This is my personal request, personal recommendation, and I believe that if this you follow, you will become wonderful writer, and written communication will become very strong. Now the second, another very important component I'm going to share based on my experience, because long back I have worked with defense sector where I have seen people writing point wise. Broadly I have seen in defense personnel that any correspondence they do, they write in terms of points. Say any communication they want to write, they are not in habit of writing paragraphs or long story. Rather immediately they start with point number 1 this, point number 2 this, point number 3 this, point number 4 this, and thereafter the entire communication gets closed. So they are talking in terms of point, what they wanted to convey point wise they are writing. It brings 100% objectivity to your written communication, and it gives complete clarity. So sometime, if not always, then sometime you try to use point wise writing, and this way you will see that your written communication is naturally becoming more objective and bringing more clarity, and obviously it will become concise, and it will set tone of the written communication also. So as I have discussed 4 C's, these 4 C's will be included in will automatically be included in the written communication if you, for just 4 years of your graduation program, if you stop using any tool, AI tool, or any mechanized tool for your writing work or the written work. And the second is, if you start writing point wise, these your written communication obviously going to become excellent, and you will not face any difficulty in your future life when you join your any job or corporate world, or be it any place of work. तो फ्रेंड्स, रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन आपसे मैंने डिस्कस किया डिटेल में इस एपिसोड में और इसके पिछले एपिसोड में। और ये पूरा पार्ट जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का पार्ट है, कैप्सूल है, ये कंप्लीट होता है। और अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगा कि वो सेकंड, दूसरी वो कौन सी स्किल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और वह ग्रेजुएशन करते हुए आप ज़रूर नर्चर करें उसको, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप किसी जॉब में आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, और इसको कैसे नर्चर करें और ये कितना ज़रूरी है, इस पे मैं डिटेल से बात करूंगा अपने अगले एपिसोड में। सो स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले एपिसोड में मिलते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इस पे बात करने के लिए और डिटेल में आपको समझाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।